very good evening to all of you. Am I clearly audible and visible to you all? I'm sorry for the slight delay. I was not able to connect to the internet. But तुमको मेरा तो पता ही है कि जब तक इंटरनेट चालू नहीं होगा मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो हूँ नहीं. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट सही, पर मैंने इंटरनेट की ऐसी तैसी बजाई देनी. और उसको भी प्रॉब्लम है, यू नो, कि जब भी मेरे को कोई क्लास लेनी होती है तभी जरूर कुछ ना कुछ होता है. राइट? सो हाउ आर वी? आज हमारी सुबह क्लास नहीं हुई ना. आई सो मिस्ड यू गाइस, बट वी आर गोइंग टू सी टुमारो एट 8 AM. हाँ, all right. So are you ready for the quiz? Shall we get started? Chalo ji. I'll share the Kahoot pin with you guys. I'll type it in here only. And I'll type it in your, what you call, Telegram channel also, so that all of you can have it from there as well. It's 681010. I repeat, 681010. Let's pin this message. Let's copy this message. Six eight 1-0-1-0. Yes, this is free. मुफ्त. तुमको कोई पैसा नहीं भरना. युसरा, देखिए DPP का फंडा ही यही है, that you have to do them every day. If you don't do them every day, that means आप बैकलॉग में जा रहे हो. तो बैकलॉग इकट्ठा करो ही मत. See, all the instructions are given that you have to go to www.kahoot.it. You enter the pin which I just told you, 681010. And then you can get going with the quiz. I'm very good, Shubho. How are you? All right. तो इसको बंद कर देते हैं और इसको ले आते हैं और इसको ले आते हैं. So I've got lots and lots of students who've just started up with it. All right. थोड़ा music हो जाए. Are you able to hear the music? Yeah. क्यों नहीं आ रहा है? Yes. All right. Let's change the video capture. छोटा कर देते हैं. यहाँ आ जाते हैं. Good. Full screen भी कर. Hi, मैं टॉप पे हूँ. Ready? Steady. Let's start. So biological classification, here you go. So it says a kingdom common to unicellular animals and plants is. Get well soon, Shubho. John, you can see the pin at the bottom of the page. 681010. Wonderful. See, all the unicellular eukaryotic organisms, plants and animals सब eukaryotic होते हैं. ठीक है? तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि animals and plants are eukaryotic, belong to kingdom
प्रोटिस्टा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चल जी, वेरी गुड इवनिंग रिद्धि। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन, कहाँ देखने को मिलते हैं आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज? कौन से टाइप के सेल में? वो टाइप का सेल किन के पास नहीं होता? एक अकेले जिनके पास वो टाइप का सेल नहीं होता। वेरी गुड, मोनेरा जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिनके पास यूकैरियोटिक सेल टाइप नहीं है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, एंड देयरफॉर व्हिच अमंग्स देम इज अ मोनेरा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज अ मोनेरा. Saccharomyces is a yeast belongs to fungi, Ascomycetes. Chlamydomonas is a green alga unicellular now considered in Protista. Plasmodium, again a protozoal protista, all eukaryotic except Streptococcus bacteria, prokaryotic. Willa, very good. Wow, Kanish, Kanike. Enzymes are absent in. You know, enzymes are biocatalysts. These are biomolecules which are present in the cytoplasm, which actually make cytoplasm the main arena of cellular activities. In which type of organisms you do not see these enzymes? Quickly, 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 quickly. Viruses, because viruses lack their own cellular organization. उनके पास कोई सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो फिर साइटोप्लाज्म में एंजाइम क्या खक होएगा? नहीं होता। वाह मुन्नाजा वाह। चलें, common cold. What type of disease is a common cold? Is it bacterial, viral, protozoal, fungal? No worries, Shubho. Health is priority. It's a viral disease. Corona. Common cold is another name for corona. It's a viral disease. चलें, next. भलाल देव आ गए नीचे. Which is responsible for recycling of material? Bacteria, algae, protista, virus. कौन है जो recycling of minerals करते हैं? Minerals like carbon, minerals like nitrogen, iron, sulfur. Very good. Bacteria, the chemosynthetic bacteria, the thiobacillus, the ferrobacillus, the nitrifying bacteria, they are responsible for. According to me, there are no bonus chances. If you ask me, मुझे नहीं लगता वो bonus देंगे. Parasitic and saprotrophic conditions are more familiar in. Like when I say more familiar, you have to find an answer which is more appropriate. Let's see who gives a more appropriate answer. Very good. Fungi, क्योंकि fungi सारे fungi saprotrophic होते हैं और fungi disease causing भी हो सकते हैं, parasitic भी हो सकते हैं. दोनों चीजें बैक्टीरिया को भी अप्लाई करती हैं. But more appropriate कौन होगा? Fungi. Very good. Algae and fern नहीं होते. Now Aditya, they can always say आपने गलत इंटरप्रेट किया था. In addition to absence of chlorophyll, what is the other difference between fungi and higher plants? Fungi भी हरा होता है, plant भी हरा होता है, but the reason is different. Type of nutrition and composition of cell wall. Wonderful. Cell wall of plants, cellulose. Cell wall of fungi, chitin. ये तो नई भी न्यूज़पेपर में आता भूमिका, तो भी मैंने पहले बता दिया था कि एंड ऑफ अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा.
A very, very happy Janmashtami to you guys. Chilling. Which one of the following are intracellular obligate parasites? Mind the word intracellular. वेरी गुड. वायरसेस देखो, बैक्टीरिया तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, वो किसी की बॉडी के बाहर रह के टॉक्सिन बना के भी नुकसान कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेल के अंदर ही घुसे. ठीक है, तो वायरसेस वो है जिनको बिना किसी सेल के अंदर घुसे लाइफ ही नहीं है उनके पास. दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वर्ड ही वायरसेस के लिए यूज होता है. प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है? इज इट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम? वेरी इजी. यूग्लिना. इट्स अ मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. कौन है ये जो अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम को भी प्लांट लाइक बोल रहा है? चाटे ही चाटे, इतने पता नहीं कितने. वेरी गुड जिशान. Entry. Aristotle classified the plants on the basis of their morphological characters and characterized them into morphological characters like height. When he read the height, he classified them into very good. Herbs, shrubs, and trees. 90% of you are correct. So proud of you guys. Wonderful. Chilling. Scoreboard remains the same. Which one of the following helps in absorption of phosphorus from soil by plants? मैंने स्पेशली बताया था, ये absorption में help करते हैं minerals की, और specifically phosphorus as a mineral की absorption में help करते हैं. Wonderful. Mycorrhiza, beta. Mycorrhiza have symbiotic association of roots of higher plants with fungi. Fungi which help in absorption because they have an absorptive mode of nutrition. Water absorption with specific phosphorus for proper growth and development. Rhizobium तो nitrogen fixation करता है राजे, phosphorus थोड़ी देता है वो. Aniket was back in the game with 3 in streak but then lost it. Which of the following bacteria are responsible for production of biogas from the dung of cows and buffaloes? Which type of bacteria do you see in the cow dung, which are responsible for production of the biogas? The composition of biogas, the major component is methane gas, and methane gas forming bacteria are methanobacterium. मैं क्विज लेती हूँ तो अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए. Oh my 100% correct answer. This has never happened in my Kahoot ever till date, since 2 years. Wonderful. Record breaking question, man. Chale. The wall of bacteria consists of bacteria cell wall. है ना? All the bacteria have cell wall except mycoplasma. And the cell wall of bacteria is made up of a typical material called murine. Murine, which is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan, which is a polymer of dash and dash. NAG and NAM. N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. Wonderful. ये HWA PSK आपस में खेल रहे हैं, कभी एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है. Which of the following is a symbiotic nitrogen fixer?
It fixes nitrogen. That means it converts atmospheric nitrogen to ammonia when it is symbiotically associated with another organism. Is it glomus, azotobacter, azola, frankia? It's frankia. बुद्धू. ग्लोमस तो माइकोराइजा है, ठीक है. अजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. वो किसी के साथ सिम्बायोटिक नहीं होता है. ओके. फ्रैंकिया is symbiotically associated with Alnus, the non-leguminous plant. Azola is a fern. It shows symbiotic association with Anabina. Anabina is a nitrogen fixer, not Azola. क्या यार, 100% से सीधा लेस देन 50% पे आ गए. फिर आ गया पीएसपी के ऊपर और नीचे चला गया एचडब्ल्यूए. Heterocysts present in nostoc are specialized for which type of process? एक तो आपको पता होना चाहिए nostoc है कौन, ठीक है, whether it is belonging to which kingdom, and उसमें ये heterocysts क्या काम करते हैं. Very good. Almost 95% of you are correct. Nitrogen fixation. Nostoc is a cyanobacteria and Nostoc anabina are cyanobacteria that can fix atmospheric nitrogen by the help of heterocyst. PSP के कह रहा अब नहीं खेलूंगा मैं, बस हो गया. लो, ये तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया. कौन है ये? फ्री लिविंग, एरोबिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ यार. ओ यार, ये तो हमने कर लिया यार. अजोटोबैक्टर. नॉस्टॉक तो फोटोसिंथेटिक है ना, वो साइनोबैक्टीरिया है. वो ब्लू ग्रीन एल्गा है, वो फोटोसिंथेसिस करता है. और ये कौन है जो ई कोलाई को नाइट्रोजन फिक्सिंग बना दी है जिसने? ये चार चार के चार चार चांटे. Reproduction in most of the bacteria is by a process known as. Maximum bacteria reproduce how? जल्दी बताओ. टिक टिक 1 3 6 7 8 9 10. It's so easy. Bacteria usually reproduces by asexual mode of reproduction, binary fission. चलो, very good. तुमने सवाल भी बहुत अच्छे से किया है. अगला सवाल. The autonomously independent self-replicating extranuclear DNA imparting certain factors to some bacteria is called. It's like reading a menu of a hotel. Palak paneer, aloo paneer, gobi paneer. Blah, 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 blah. What is it? Plastid, plasmid, phagemid, cosmid. What is it? Wonderful. It's a plasmid. The extranuclear DNA. बेटा प्लास्टिड तो सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल्स में होता है. प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल है ना. बैक्टीरिया के पास सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, वो प्रोकैरियोटिक सेल है. गड़बड़ कर दी ना. The main difference between gram positive and gram negative bacteria is, हमने पढ़ा था मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं. The only difference is in the presence of the different cell envelope, and the cell envelope may be cell wall or glycocalyx. Your gram positive have a thicker cell wall, gram negative have a thin cell wall. Gram positive lack a glycocalyx most of the time, whereas gram negative have a thicker, broader glycocalyx. Chalo, scoreboard remains the same. Oxygen is not evolved in which of the following? Photosynthesis performed by which of the following organisms? Blue-green algae, bacteria, autotrophic plants. Easy.
Very good. Bacterial photosynthesis does not release oxygen. Specifically one exception, cyanobacteria में ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाकी किसी भी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती. चलो HWA बेचारा ऊपर नीचे थक गया होगा पुत्र तू. Bacterium which reduces nitrates to nitrogen, माने कि नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Denitrification. And which amongst them is a denitrifying bacteria? Is it Nitrosomonas, Pseudomonas, Rhizobium or Clostridium? Nitrosomonas is a nitrifying bacteria बेटू. वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जब अमोनिया बनती है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट. ठीक है. एंड दैट टू नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये लोग नाइट्राइट बनाते हैं. नाइट्रेट बनाने वाले तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस है. ठीक है. राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है. नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस करते हैं, और ये नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, सूडोमोनास. कोई बात. चले. Transformation experiment was first performed on which bacteria? The parasexual mode of reproduction of bacteria, where we have three: transformation, transduction and conjugation. तो ये जो transformation वाला experiment था, that there is a variation in bacteria which is introduced by external medium on another bacteria, was first time performed by Griffith on Diplococcus pneumoniae. Very good. चलो जी, नया नाम संयंतन का. बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजेला एट वन एंड इज कॉल्ड, हमने पढ़ा था ना, that classification of bacteria on the basis of arrangement and number of flagella, one or many, on one side, on both sides. Quickly. Very good. When one flagella on one side, we call it monotrichous. Chalo ji. Next. Which of the following is the site of respiration in bacteria? अब बैक्टीरिया है, मोनरा को बिलोंग करता है. मोनरा के पास प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है. प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के पास सेल ऑर्गेनेलीज तो होते नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, तो फिर वो रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? Very good. The respiratory structures in bacteria are mesosome. हाँ कनिष्क, हो सकता है, बट अभी इसने बोला है ना कि वन ऑन वन साइड. Bacteria differ for plants in that they do not have. बैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता जो प्लांट के पास होता है? अगेन क्लासिफिकेशन, ये दोनों किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? उस किंगडम में किस टाइप के सेल्स होते हैं? प्लांट किंगडम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मोनरा unicellular prokaryotic which do not have a well defined nucleus. ये तो इजी था यार. Bacterial flagella do not show ATPase activity, do not show 9+2 organization. They show a 9+0 organization as they are not membrane bound structures. क्योंकि prokaryote है ना, prokaryote में कोई भी चीज membrane bound नहीं होती है, right? तो वो एक यूकैरियोटिक फ्लैजेला की तरह मेम्ब्रेन बाउंड टिब्यूल्स का नहीं बना है. टिब्यूल्स जो ट्यूबुलिन के बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजिलिन. बेटा ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड ट्यूब्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, एंड वी डू नॉट हैव दीस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया. सो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू सेल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन. ऑलराइट, अगेन स्टैटिक बोर्ड.
Citrus canker. What is citrus canker? It's an animal disease or a plant disease? And what kind of a disease is it? Is it viral, bacterial, fungal, or protozoal? And if it is either, what is the name of the causative agent? कौन बताएगा मुझे फटाफट? In the live chat, please. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Citrus canker is a plant bacterial disease, and the bacteria which causes citrus canker is Xanthomonas citri. Wonderful. चले आगे. Okay. Again a static board. Oh my god. Next. Spellings, Kanishk. Spelling. In cyanobacteria, which of the following is present? हम बोलते हैं cyanobacteria is now known as cyanobacteria. Earlier was known as blue-green algae. Blue-green because it had chlorophyll. It could perform photosynthesis, and the chlorophyll, which is similar to higher plants, that is chlorophyll A. Wonderful. 90% correct. Check. The thalloid body of slime mold. Slime molds which belong to kingdom Protista. They are unicellular, fungi-like organisms, and their body, the network of their body is known as mosses. है ना? Your gametophytic primary structure of mosses is called protonema. Plasmodium is a biological morphological form of your slime molds, the aggregate of slime molds which forms during favorable conditions. Fruiting body is the word which is used for the sexual reproduction or asexual reproduction body, reproductive body के लिए. Mycelium is the name of the body which is given for fungi reticular network. All right. Let's go to the next question. Static board, oh my god. जो फंजाई की बात करी तो बताओ एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? Which fungi? 1, 2, 3, 4, 5. फटाफट. Time is running. It was an easy one. Ascomycetes को sac fungi बोलते हैं because ascomycetes जब sexual spores बनाता है तो within the sac बनाता है, endogenous spores बनाता है. 4 to 8 in number. Sac fungi. In mushroom which belongs to Basidiomycetes. It's an edible Basidiomycetes. The gills are meant for, and we know कि Basidiomycetes जब reproduction show करते हैं, especially जब sexual reproduction show करते हैं, तो एक fruiting body लगाते हैं Basidiocarp, और उस Basidiocarp पे बहुत सारे Basidium लगते हैं. Basidium जिसपे spores लगते हैं, तो these gills basically act as Basidium जिसपे spores लग रहे हैं, ठीक है, which help in reproduction. और कौन से spores लगेंगे? Basidiospores, exogenous club shaped spores, जिसकी वजह से आपके Basidiomycetes को club fungi भी बोला जाता है because spores are club shaped. चलो अब Basidiomycetes की बात हो रही है तो बोला ये बताओ सारे Basidiomycetes है बिसाइड एक, कौन है जो Basidiomycetes नहीं है? Quick. Be quick. Hurry up. I want the correct answer. Five. बाकियों ने मार्क क्यों नहीं किया? Agaricus. Is Basidiomycetes, mushroom, Ustilagos, smut diseases, Puccinia, rust diseases. Alternaria solani is your Deuteromycetes. It causes early blight of potato. Chale. What about the Deuteromycetes of Alternaria solani?
जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, किस टाइप का माइसीलियम होता है उनका? मॉर्फोलॉजी ऑफ द बॉडी कैसी होती है? वेरी गुड, इट्स ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सिर्फ एक ही ऐसे फंजाई हैं जिनकी बॉडी में ए सेप्टेट हाइफे होते हैं। कैन यू टेल मी वो कौन से वाले फंजाई हैं जिनकी बॉडी में ए सेप्टेट हाइफे होते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड नजर आते हैं, जिनको हम सीनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं? इट इज प्रेजेंट इन ए सेप्टेट माइसीलियम व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन क्लास or division of fungi, rather class would be the wrong word, one division of fungi. Which division is that? Phycomycetes or the algal fungi. Very good, Munasa. जाग रहे हो मतलब तुम, good. अभी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है जिनके पास ब्रांच सेप्टेट हाइफे होता है, जिसमें ऑल्टरनेरिया है, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, बिकॉज इनमें परफेक्ट स्टेज नहीं होती, सेक्सुअल स्टेज नहीं होती. दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हिच वन इज दैट? It's the chained exogenous spores, that is conidiospores. Zoospores are motile spores characteristically formed by Phycomycetes. All right. Protein coat of a virus which surrounds the nucleic acid is called dash. What is it called? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the easy one. Capsid, and each unit of it is known as capsomer. Chalo ji, static board once again. Viruses are also known as, अभी हमने बताया कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड के अराउंड प्रोटीन होता है, तो इसीलिए वायरसेस को हम किस नाम से और जानते हैं? Very good. They are known as the nucleoprotein crystals, and the crystallization part was done by Stanley, जिसने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उसके पास प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है ना? And the Naik आदमी, Bijiri Naik, told about contagium vivium fluidum, right? All right. Next question. I'm running a little low on battery. I'm sorry. Next question, please. I'll get my charger. Retroviruses, the genetic material is RNA. HIV is a retrovirus. They have genetic material as only RNA. Sorry, I had to leave because बंद हो जाती क्लास, बैटरी डाउन हो रही थी लैपटॉप की. चले. Viruses did not find a place in classification since, क्यों नहीं RH विटिकर ने उनको क्लासिफिकेशन दी थी? क्या हो गया था कि उनको हमने नहीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई पोजीशन दी? Because they lacked a cellular organization. ठीक है? And this cellular organization की वजह से हमने उन्हें बोला कि क्योंकि उनके पास सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, they are not truly living. Okay? So वो obligate parasites है, वो pathogenic है, but वो truly living नहीं है. इसमें ऑप्शन बी से ज्यादा ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज एनसीईआरटी लाइन कहती है दे आर नॉट ट्रूली लिविंग because they lack cellular organization. Non-cellular would be a wrong word.
है ना. नॉन सेलुलर तो बहुत सारी चीजें होती है. जोना पेलुसिडा भी नॉन सेलुलर है, बट हम उसको लिविंग बोलते हैं ना. इट्स अ लिविंग कंपोनेंट. सो नो. More appropriate would be they are not truly living. Those viruses, phage is the word which is used for viruses which kill bacteria. के आंसर्स बता देते हैं. कौन है जो सिनोसिटिक होते हैं? समझदार के लिए इशारा ही काफी है. मल्टीन्यूक्लिएटेड विद एसेप्टेट हाइफे वाले फाइकोमाइसिटीज हैं जो सिनोसिटिक होते हैं. आई होप नाउ इट्स ओके. भलाल. अच्छा, जब भी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, हाँ, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कोई भी हो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज. कहूट तो चल रहा है, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई? आ गए. प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी. एकदम से ही 60 आंसर्स हो गए थे, पता है. चले. Mycorrhiza. It's an example of symbiotic relationship, parasitic relationship, saprophytic relationship. None of these. Uh-oh. Very good. It's a symbiotic association of roots of higher plants and fungus, especially a species of fungus, glomus. Which of the following class consists of cynocytic multinucleated aseptum mycelium? Shit. ये तो बोनस क्वेश्चन होना चाहिए. ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. बिलीव यू मी, एक ही क्विज में 3 बार सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल मतलब वही वर्ड्स निकल के आ रहे हैं. अगर ये भी तुमने गलत कर दिया ना तो फिर भगवान ही मालिक है तुम्हारा. हाउ कुड यू गो रॉन्ग? इतनी बार से बोल रही हूँ, सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेट हाइफे किसमें होते हैं? फाइकोमाइसिटीज. ये तो 100% कलेक्ट जाना चाहिए था. हाँ रिद्धि. Which of the following fungus is used extensively in biochemical and genetic work? Genetic studies like were performed on Drosophila were also performed on this fungus and is hence known as Drosophila of the plant kingdom. The pink mole, which is none other than Neurospora. मेरा aspergillus आपको बहुत सारे chemicals provide करता है, but it is not the Drosophila of the plant kingdom. भैया 10 क्वेश्चन हो गए ज्यादा. ये स्कोरबोर्ड हिलने को नहीं दे रहा. Fungi that absorbs nutrients directly from the living host are called. देखो फंजाई यूजुअली तो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. अगर वो सैप्रोट्रॉफिक नहीं है, माने वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड नहीं कर रहे, वो लिविंग पे फीड कर रहे हैं, तो फिर फंजाई और क्या होते हैं? अगर वो सैप्रोट्रॉफिक नहीं है तो वो पैरासिटिक होते हैं. ठीक है कि नहीं? चलो कोई तो क्वेश्चन गलत करो. कनिष्क, शिव, उन्नति, सयंतन, वर्षा, हाउ कैन यू ठोकोफाई अ सीड लाइक दैट? चलो. ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय. कौन कॉज करता है रस्ट ऑफ व्हीट? रस्ट डिजीजेस. It's fungal. It's a fungal disease. बेटा बैक्टीरिया वाला वो जो रस्ट है वो अलग है.
ठीक है, rust of wheat is caused by fungi, Puccinia, Basidiomycetes. फिर गलत नहीं किया किसी ने। आखिरी 3-4 क्वेश्चन रह गए। What are protozoans? Protozoans are primitive animals, unicellular eukaryotic protists. They have which type of mode of nutrition? They are all heterotrophic since they are animals. ठीक है, they are not saprophytic. They are all heterotrophic protozoans. ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो है आपका, जो प्रोटिस्ट है, वो सैप्रोट्रॉफिक होता है. प्रोटोजोन्स तो all are heterotrophic. They are parasitic, and if they are free living, they are holozoic. They can be symbiotic, but they are not saprotrophic. Trypanosoma gambians, the zooflagellate, the protozoan, the protistan protozoan, single cell unicellular eukaryotic animal-like protozoan, causes the disease African sleeping sickness with the help of the vector CC fly, which is scientifically known as Glossina palpalis. All right, next. Kanishk, how can you get 48 answers correct? I've just got 48 answers. एक भी गलत नहीं किया तुसी, एक भी गलत नहीं किया. In protozoans like amoeba and paramecium, which of the following organelle is found for osmoregulation? Which organelle is responsible for osmoregulation? Osmoregulation is salt water balance. Also aids in excretion. Contractile vacuole. Wonderful. And amoeba में fresh water में ही देखने को मिलता है contractile vacuole. Marine water में तो वो disappear हो जाता है. Static board है मेरा. आखिरी क्वेश्चन रह गया. कोई तो लाज रख लो, कोई तो हराओ इनको. ये पांचों के पांचों कैसे 5 भीम भाई की तरह बैठ गए यहाँ पे. Passive food ingestion in amoeba is known as. चलो, कोई तो गड़बड़ करेगा इसमें. I'm 100% sure. दो मेरी क्लास में बताया हुआ है. इसमें मैंने ही गलती कर दी है. Correct answer is circumvallation. Neither is it invagination, nor is it circumfluence, nor is it import. The correct answer is circumvallation. और तो किसी ने गलती करी नहीं करी, मैंने ही गलती कर दी है. Please make a correction. The correct answer is circumvallation. Too excited to launch. मैंने ही गलती कर दी है. Congratulations, Unnati, Shiv, Kanishk. तो according to me, तुम सब में 50 on 50 ठीक करे, हाँ? Sayantan, Varsha, you all have been my Panch Panda for today. Static on my board since 20th question. 25th question में तुम पांचों के पांचों सेम ही मेरे को बोर्ड पे नजर आ रहे थे. Wonderful, Anisha. Wonderful. Very good, Vikas. Balal, definitely you were also there on and off. HWA भी था, PSPK भी था, आ रहे थे, जा रहे थे. मेरे सैप्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं, पैरासिटिक होते हैं. फंजाई जब भी लिविंग मटेरियल पर एक्ट करते हैं तब वो पैरासिटिक होते हैं. दूसरा बहुत अच्छा है बेटा. कनिश, डीपीपी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए. देखो ना, क्विज में तुम फर्स्ट आए.
Don't be sad, Divya. It's a very good score. We have approximately 100 amongst 100. If you're in top 20s, it's a big thing. Slow start, but good start. Very good, Rituja. Very good, Aniket. I was expecting you to be on the top one. Pata hai? Very good. So I hope now you all are clear with biological classification. I know उन्नति वो मेरी वजह से गलत हो गया. You're most welcome, Anisha. It's okay, Sakshi. Let's not make the same mistake again. तो यही तो लॉजिक है कि क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं. Questions would be from the same lodge only. You have to just find the correct answer. Similar type की क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएगा. क्वेश्चन तो वही रहेगा. क्यों बोलते हैं हम नीट की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो? क्योंकि क्वेश्चन तो वही है. एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठ के आ जाता है. So we can't change the concept. You've cracked it already. पता है क्या होता है Kahoot में ना statement wise question because Kahoot has a limit. You know, it has a limit in which I can put number of characters in an option. I can't put big statements. कोई बात नहीं अनिकेत, अब चैप्टर 3 कर लेना. Okay? So you have to practice DPPs. You don't have to create a backlog. It's okay, Bhalal. That's Kahoot ka calculation. Chale. So was it fun? So we are going to do the same for Plant Kingdom once we finish it. So tomorrow we are meeting again for Plant Kingdom lecture 4 and we are going to be doing pteridophytes. So we will be seeing you tomorrow morning at 8 o'clock. Yes? DPP gives daily practice paper comes only once a day. Remains there for 5 days. You have to finish your backlog in 5 days. That's my only effort to prevent any backlog. Please, please, please. Perfect, Riddhi. And get more competition for you, yaar. Tell your friends to attempt the quiz and see तुम्हें कितना आता है. तुझे कुछ आता ही नहीं है. You know, ऐसे वाला. ये तो कुछ भी नहीं है. तू वो वाला quiz करके देख ऐसा वाला. No problems, Kanish. एक assertion चले. A very happy Janmashtami to you guys. And God bless you. Take care. I'm going to see you tomorrow morning at 8 o'clock. ठीक है Yusra. I'll do something. Let me think. क्या कर सकते हैं? Okay? Bye-bye.